Welcome everyone to our Concepts पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे campaign video, and in this video I'll be discussing about a very important doctrine under the Companies Act, and that is the Doctrine of Ultra Vires. So we'll be looking on to the different aspects of the Doctrine of Ultra Vires in this particular video. Do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. अगर आपको कोई भी questions हो, queries हो, you can contact us through this email ID or you can call us on this number. आप हमारी website को भी विजिट कर सकते हो जहाँ पे कि आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स. नाउ मूविंग ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. तो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हो गया, हमें पता है प्रिंसिपल्स. तो डॉक्ट्रिन मींस प्रिंसिपल्स एंड अल्ट्रा वायरस दो वर्ड से बना है, अल्ट्रा एंड वायरस. सो अल्ट्रा का मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड, एंड वायरस का मतलब क्या हो गया, पावर्स. सो समथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स, आइदर ऑफ दीज. ठीक है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेसिकली टॉक्स अबाउट समथिंग विच द डायरेक्टर या कंपनी जो है करती है, कोई भी एक्ट या ट्रांजैक्शन जो कि बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द अथॉरिटीज दैट हैज बीन कंफर्म्ड ऑन देम, दे आर डूइंग. सो मूविंग ऑन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वी कैन सी दैट एनीथिंग विच इज डन बाय द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स विच इज बियॉन्ड द स्कोप विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायरस. सो एनीथिंग, कोई भी एक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी करती है, डायरेक्टर्स एंटर करते हैं, दे हैव टू बी इन कंसोनेंस विद वो अकॉर्डिंग टू द स्कोप और ऑब्जेक्ट विच इज देयर इन द मेमोरेंडम. इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, और व्हाटएवर प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट. सो अगर कंपनी या डायरेक्टर्स उसके कोई भी काम या ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं जो कि बियॉन्ड है द प्रोविजंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट और बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन मेंशन्ड with respect to that company in the memorandum of association of those acts or transactions, they are ultra vires. Purpose behind this particular doctrine is कि assurance दे सके creditors and shareholders, those who are the creditors and shareholders of the company, जिन्होंने अपने पैसे दिए हैं कंपनी को for carrying out its very object as detailed in the memorandum, वो सारे funds जो हैं that is only to be utilized for the purpose specified in the memorandum of association. So those funds have to be utilized as per the scope of the memorandum objects specified in the memorandum. So purpose क्या है, to assure, to protect, to safeguard, you can say, the interest of whom, the shareholders and the creditors of the company. Okay, and so it is providing a line beyond which the directors of the company are not authorized to act. एक बाउंड्री होनी चाहिए कि आपको इस बाउंड्री के विद इन ही रह के काम करने हैं, ट्रांजैक्शंस एंटर करने, एक्ट्स करने हैं with respect to the company. You cannot cross this limit. You have to work within the scope of those objects. Now effects क्या है, consequences क्या है with respect to the doctrine of ultra vires. So void ab initio. So void ab initio क्या हो गया, obviously अगर कंपनी या उसके डायरेक्टर्स कोई भी ऐसे काम करते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के बियॉन्ड है या फिर ऑब्जेक्ट लॉस जो उसके मेमोरेंडम उसके बियॉन्ड है, so they are to be treated as void ab initio, जिसका मतलब हो गया void from the very beginning. ठीक है. So उस particular contracts, transactions, acts के लिए कंपनी विल नॉट बी बाउंड, एंड सो उस केस में न कंपनी सू कर सकती है न कोई और कंपनी को सू कर सकता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट्स के लिए, बिकॉज इट इज वॉइड. सो समथिंग विच इज वॉइड, फॉर दैट नाइदर द कंपनी नॉर द थर्ड पार्टीज और एनी अदर पर्सन कैन सू विथ रिस्पेक्ट टू दोज. नाउ इंजंक्शन. इंजंक्शन क्या हो गया, स्टे ऑर्डर हो गया विच इज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट. सो कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है कंपनी अगर अंडरटेक करने वाली है, सो इन दैट केस मेंबर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन गो अहेड एंड गेट एन इंजंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट विच विल बी रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम गोइंग अहेड विद सच एक्ट्स और ट्रांजैक्शन. सो वंस द कोर्ट गिव्स द इंजंक्शन ऑर्डर, दैट विल पुट अ or that is put a stay on all the ultra virus act if the company is going to undertake. Then personal liability of the director. Who are the directors? They are basically the persons who manage the day-to-day affairs of the company. They look after the company, they care of the company, its funds, everything. So personal liability of the directors is one of the effect which comes into force अगर कंपनी का कैपिटल जो मनी है वो डाइवर्टेड है, यूटिलाइज हो रहा है किसी भी पर्पस के लिए जो कि मेमोरेंडम में नहीं स्पेसिफाइड है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं स्पेसिफाइड है, तो वहां पे डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम. दे नो द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. इफ दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट अथॉरिटी, बियॉन्ड
beyond that power and utilizing company's money or capital, you can say, तो उस केस में they will be personally liable with respect to that. Then acquisition of ultra virus property by the company. ठीक है, तो अगर कंपनी के पैसे को यूटिलाइज करके the capital is used ultra virus with respect to acquisition of some property, so उस केस में जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कंपनी का राइट होगा, since its capital has been utilized, so the company can go ahead and acquire or have acquisition of such ultra virus property. And then the personal liability of the directors to third party for ultra virus transactions. So directors liable होंगे with respect to third parties also if any ultra virus transactions are being undertaken with them by the directors which is outside the scope of authority vested to them. So ये हमने effects की बात कर ली. और अब अगर हम बात करें types of ultra virus acts, so basically ultra virus acts को कुछ categories में हम divide कर सकते हैं, जैसे कि पहला acts or transactions which are ultra virus to the companies act, they are void and cannot be ratified. अब कोई भी act या transaction जो है ultra virus है beyond the powers, authority, provisions that have been laid down under the companies act, तो उस केस में companies act हमारा क्या law है, statute है, nothing can be done by the company beyond what is provided or what is laid down under the companies act. So in case कोई भी act या transaction company undertake करती है which is ultra virus to the companies act, then they are to be considered to be void, and since they are void they cannot be ratified at any point of time. Now acts or transactions ultra virus to the memorandum हो गया, charter हो गया, constitution हो गया company का, where all the objects or purpose of the company that is laid down. So ultra virus act, any transaction or act which is ultra virus to the memorandum, those also cannot be ratified. क्यों नहीं ratify कर सकते shareholders भी? क्योंकि वो void ab initio, from the very beginning they are void. Next is acts ultra virus to the articles of the company. Acts जो है ultra virus है, transactions ultra virus है articles of association के company के, but वो intra virus है, within the scope of authority of the company है, then in that case वो ratify कर सकते हैं shareholders articles को alter करके. And then lastly acts which are ultra virus to the directors of the company but intra virus the company. अब कोई भी act जो कि articles के ultra virus है या directors के ultra virus है, so they can be ratified since they are intra virus the company. But if they acts or transactions they are ultra virus the companies act or the memorandum, then in that case they cannot be ratified since they are void. So this was all about the doctrine of ultra virus. Stay tuned to us as we at iExam we help you prepare for your exams 50% pass